Hello everyone, welcome to Gitish Zone. तो आज हमें menstrual cycle पढ़िबा. Menstrual cycle is the cyclic changes in the female reproductive tract of primates like monkeys, apes and humans. Primates मानकर female reproductive tract रे the cyclic changes देखा जाइए ताको कहा जाउची menstrual cycle. Menstruation is the bleeding from the uterus of an adult human female at an interval of one lunar month, that is 28 days. मासर इंटरवल रे एडल्ट ह्यूमन फीमेल मानक पाखरे यूटेरस रो ब्लीडिंग देखा जाय थाए ताको कह जाउची यूटेरस रो ब्लीडिंग हे थाए ताको कह जाउची मेंस्ट्रुअल साइकिल. The menstrual cycle begins at puberty. Puberty समय रे menstrual cycle आरंभ होय थाए, that is called menarche in girls at around 10 to 13 years old. गर्ल्स मानक पाखरे 10 ରୁ 13 वर्ष मध्यरे मेंस्ट्रुअल साइकिल आरंभ होई थाए जेहा कह जाउची मेनार्च. माने बिगिन्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनार्च जहा कि 10 ରୁ 13 वर्ष मध्यरे हे थाए आ ताकर प्यूबर्टी एज रे हे थाए जहा कह जाउची कैशोर अवस्था. एटा केबे आरंभ होय थाए ना प्यूबर्टी एज ताले केबे ना 10 ରୁ 13 वर्ष मध्यरे होची प्यूबर्टी एज बा कैशोर अवस्था. It is regulated by hormones of hypothalamus, pituitary and ovary. Hypothalamus और pituitary hormone एवं ovary द्वारा इटा regulate हे थाए. The menstrual cycle consists of 3 phases. 3टा phases consist करता है. menstrual cycle 3टा phase contain करता है. menstrual phase जहाँ की 3 ରୁ 4 दिन जाए हे थाए. proliferative phase जहाँ की 10 ରୁ 11 दिन जाए हे थाए. तापर असला secretory phase और luteal phase जहाँ की 13 ରୁ 14 दिन जाए हे थाए. The cycle starts with the menstrual flow bleeding, which lasts for 3 to 4 days. Menstrual phase टा menstrual flow द्वारा आरंभ होय थाए जहाँ के 3 ରୁ 4 दिन जाए हे थाए. The menstrual flow results due to the breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessel. Blood vessel और endometrial lining रो breakdown द्वारा ए menstrual flow हे थाए. देखिए एई जो लाइनिंग अछि से लाइनिंग को जे एंडोमेट्रियल लाइनिंग. तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग और ब्लड वेसल तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग और ब्लड वेसल ब्रेकडाउन द्वारा मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है. The blood with damaged tissue comes out through the vagina. जो ब्लड वेसल गुडी को डैमेज टिश्यू को धारण करथांती बा डैमेज टिश्यू किबा ब्लड वेसल गुडी को वजाइना थ्रू रे आस्थांती. Menstruation only occurs if the released secondary oocyte is not fertilized. Release ହେଇଥିବା secondary oocyte ଯଦି fertilized न हुए ताहेले menstruation ହେଇଥାଏ. Absence of menstruation may be indicate pregnancy. Menstruation absence होता pregnancy को indicate करता है. और ये जो indication से केवल married lady मानक पाखा देखा जाए. यदि गोटे झियो मैरिज करिछि तार यदि menstruation stop होइछि तो से pregnant अछि. किंतु गोटे झियो यदि मैरिज न करिछि त तार यदि menstruation stop हो जाइछि तो किछि रीजन पे stop हेतिबो किंतु तार माने नै कि से प्रेग्नेंट अछि किंतु गोटे मैरिड लेडी रो यदि menstruation stop हो जाइछि ताहले एटा प्रेगनेंसी को इंडिकेट करछ. The cycle is regulated by luteinizing hormone and progesterone hormone. साइकिल रेगुलेट होता है luteinizing hormone और progesterone hormone द्वारा. तने menstrual phase को कहाँ द्वारा रेगुलेट होता है ना luteinizing hormone और progesterone hormone द्वारा इटा रेगुलेट होता है. Then is the proliferative phase. The menstrual phase is followed by the proliferative phase or follicular phase. During this phase, a primary follicle in the ovary grow to become a mature graphene follicle. A phase रे गोटे primary follicle grow हेकी mature graphene follicle को transfer होते हैं. And simultaneously the endometrium of the uterus regenerates through proliferation. Proliferative phase समय रे गोटे primary follicle grow हेकी गोटे प्राइमरी फॉलिकल ओवरी रे ग्रो हे कि मैच्योर ग्राफेन फॉलिकल को कन्वर्ट हे थाए एवं साइमल्टेनियसली यूटेरस रो एंडोमेट्रियम रीजनरेट हे थाए प्रोलिफरेशन द्वारा.
These changes in the ovary and uterus are induced by the changes in the level of pituitary gonadotropins like luteinizing hormone and follicle stimulating hormone and estrogen. Estrogen ଏବଂ gonadotropin hormone ର लेवल चेंज पाइका ओभारी और यूटेरस रो ए प्रोसेस गुडी को चेंज होता है. These changes in the ovary and uterus, these changes गुड़िको ovary एवं uterus में होता changes गुड़िको are induced by the changes in the level of pituitary gonadotropins and estrogen. Pituitary gonadotropin और estrogen मानकर लेवल चेंज होगा द्वारा इंड्यूस होता है. पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन दुई टाइप रही है. गोटे होची ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और गोटे होची फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जहाँ को एलएच लिखा जायछि और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जहाँ को एफएसएच लिखा जायछि. During this phase, a rising level of follicle stimulating hormone stimulates the growth of ovarian follicle and secretion of estrogen. Ovarian follicle growth और estrogen secretion को stimulate करता है. When the blood level of estrogen rises to the peak near the middle of the cycle, it gives positive back and stimulates more luteinizing hormone by LH hormone. तो एस्ट्रोजेन ब्लड लेवल जिते बेले पीक को उठी जाय थाए बा सबुठार ऊपर उठी जाय थाए को समय ना मिडिल ऑफ द साइकिल मिडिल समय रे एस्ट्रोजेन रो ब्लड लेवल जिते हाई को उठी जाय थाए एहा पॉजिटिव फीडबैक दै थाए एवं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बाय एलएच हार्मोन सिक्रेशन को स्टिमुलेट करथाए. द एलएच हार्मोन बा द एलएच स्टिमुलेट्स ओव्यूलेशन. जिते बेले एलएच हार्मोन को स्टिमुलेट करथाए तापरे एलएच हार्मोन बा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रेशन होइथाए. जिते बेले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रेट होइथाए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तले सिक्रेट होइथाए तापरे यह ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करथाए. It occurs usually on the 14th day or midday during the menstrual cycle. यह केते बेले हेइथाए ना menstrual cycle start होबार 14th डे बेलको इटा हेइथाए. 14th डे बेलको हेइथाए आ यहा को midway मध्ये हो जाए जहा कि which is called as the ovulatory phase. जहा कि ovulatory phase मध्ये हो जाए. तापर आसला secretory phase. During this phase, the remaining part of the Graafian follicle transforms as a corpus luteum. एही phase समय रे माने secretory phase समय रे बाकी पार्ट गुडी को Graafian follicle बाकी पार्ट गुडी को ट्रांसफॉर्म हो जाती corpus luteum को. The corpus luteum secretes a large amount of progesterone. Corpus luteum large amount of progesterone को secrete करता है which is essential for the maintenance of endometrium. जहाँ की endometrium रो maintenance पाई का दरकार रहता है. Necessary for implantation of the fertilized egg. Fertilized egg रो implantation मध्ये help करता है. आउ कौन करता है ना and other events of pregnancy रो अलगा event मध्ये help करता है. The corpus luteum secretes large amount of progesterone. Corpus luteum अधिक amount of progesterone को secrete करता है which is essential for the maintenance of endometrium. जहाँ की endometrium रो maintenance ପାଇଁ ଦରକାର ହେଇଥାଏ. Necessary for implantation of fertilized egg. Fertilized egg रो implantation ପାଇଁ ଦରକାର ହୁଏ and other events of pregnancy. Pregnancy रो other events ପାଇଁ ମଧ୍ୟ progesterone ଦରକାର ହେଇଥାଏ. During pregnancy, all other events of menstrual cycle stop and there is no menstruation. During pregnancy माने pregnancy समय रे सब तक events menstrual cycle रो सब events stop होइथाए and there is no menstruation एवं menstruation होई न थाए. Corpus luteum keeps growing for the first 9 days after its formation. Corpus luteum 9 दिन जाए grow करे. After its formation, corpus luteum form हो सारा परे एटा तले फॉर्म हो जाए 9 दिन जे ग्रो कला परे फॉर्म हो सारा परे यदि फर्टिलाइजेशन न हुए ताहेले corpus luteum रिग्रेस हो जाए बा डिजनरेट हो जाए और ट्रांसपोर्ट होइते गोटे व्हाइट कलर बॉडी को और ट्रांसफर होइते गोटे व्हाइट बॉडी को जहा को कहा जाए corpus albicans. This causes disintegration of the endometrium leading to the menstruation, the beginning of a new cycle. This causes एही कारणरू
This integration of endometrium leading to the menstruation. Then, eighth by this causes disintegration of the endometrium leading to the menstruation, the beginning of a new cycle. Then गोटे नुआ cycle टे आरंभ होता है. In human menstrual cycle changes around 45 to 50 years age termed as menopause. जो एज रे फीमेल मेंस्ट्रुएशन बा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है ताको कह जाउची मेनोपॉज. तो बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनार्ज. जो एज रे मेंस्ट्रुअल साइकिल पॉज होता है बा बंद होता है ताको कह जाउची मेनोपॉज. Cyclic menstruation is an indicator of normal fertility period in human. Cyclic menstruation women मानक पाखरे नॉर्मल फर्टिलिटी पीरियड को इंडिकेट करता है. सेथिपई जदि पीरियड्स न हुए प्यूबर्टी एज रे जदि गोटे झीर पीरियड्स न हुए ताहले सेथिपई डॉक्टर को कंसल्ट करा जाए. काहेकि ना तो किसी रीजन पाइका पीरियड होने तो सेथिपई डॉक्टर को कंसल्ट करा जाए. काहेकि ना साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन गोटे इंडिकेटर कहार ना नॉर्मल फर्टिलिटी पीरियड रो एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम मेनार्ज टू मेनोपॉज. आ को जाय थाए ना मेनार्ज रु आरंभ होय थाए और मेनोपॉज रु एंड होय थाए.